Is it visible? दिख रहा है? Yes, sir. Okay, so today's topic in digital art is vector art. So I hope you guys are aware about the both sides of the designing or the softwares like raster and vector, right? So in Photoshop, definitely Photoshop is a raster software, but we can do some vector art also on that software. There is a few tools for that. Okay, so what exactly vector art is and what's the use of vector art in the industry, right? So today's topic we are going to cover all these information. It's related with the theoretical information. After that, you guys has to start working on the vector art with the Photoshop, and you have to plan something, what you have to create, and I will assign you something, the task, and you need to complete the task and you have to upload on iCloud, right? So it would be the process after this session. Okay, it's related to the vector art. So what exactly vector art is? Vector graphic is a type of image. Okay, so vector images are graphical representations of mathematical objects such as lines, curves, polygons, and its like. It means when we work with the vector art or vector shapes, so there would be a mathematical calculation comes on the top, and we can resize it, we can transform it with the help of mathematical numeric words, right? So we can put the amount and size is going to be increase, sometime we can decrease it. We found all the details, all the information in a mathematical counts, right? So in vector graphics, a graphic artist's work or file is created and saved as a sequence of vector statements. Images created with tools such as Adobe Illustrator and Coral Draw are usually vector images files. So when we work with the Adobe Illustrator and Coral Draw, so we found all the saved files is already is in a vector graphic, right? So there is no raster graphic files. We always find out AI files. It means vector art. It means vector work inside it. We can anytime we can resize it, we can reform it, and we can create and we can do some changes in a vector art. Use of vector graphic. So graphic artists, illustrators, and designers are vector graphics for a variety of reasons, including the following. So most of the illustrator artists right now, there is lots of artists who is working with the vector design or vector art. It's very popular right now at that point of time in our industries, right? Scalability सबसे बड़ा reason जो है, that's the reason behind the vector art is scalability, right? Vector formats are good for projects that require scalable graphics, including scalable type of text. For example, company and brand logos are displayed at different sizes. They show up in the corner of a mobile application or an roadside billboard. A logo created with vector graphics can be scaled up or down without loss of quality or creating a large file. Right? It means a vector graphic or vector art always will help you to create different sizes with the same file format. We never use the resolution on the height, right? We never know about the resolution, what exactly the resolution is. So first you have to just create a vector art or vector logo. So you can anytime you can resize it, right? Without losing quality of the image, right? So in this reference images you can find out the logo of the woodland on the uh, signboard of the shop, right, on a showroom of woodland. On the other hand, you can find out the same logo in a newspaper article or newspaper advertisements in a very small size, right? So same logo we can resize it anytime. Or अगर हम एक रोड साइड लोगो बना रहे हैं, होर्डिंग बना रहे हैं, so we can put the same logo and we can stretch it without losing any quality of the image or logo. We can put the any huge size logo and we can put it on the hoardings also. So that's the use of vector graphic. Okay, now ऐप एंड वेब डेवलपमेंट. सो वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट करने वाले लोग भी वेक्टर आर्ट को यूज करते हैं, बिकॉज वेक्टर ग्राफिक आर यूजफुल इन एप्लीकेशन एंड वेब डेवलपमेंट. Because web apps and the graphics they contain must work with various screen sizes and devices types. Because suppose we are a broadcasting artist, we are designing for the video formatting, and we design for the screens,
our artwork. So there is a different screen sizes always we found. Suppose we have a 16-inch laptop, we have a 42-inch LED, right? And we have a small device like a mobile phone or iPad or any kind of tablets. So we want a different resolution, and we need to create a. If we are working with the raster art, so we need to create a different sizes, images, and resolution. We have to modify it. But in vector art, we can use the mathematical count, and we can create any size with a single reference image. Right? Suppose we design a logo or a content or text on a AI. So we can anytime we can resize it, right, for as long as possible, as big as possible, we can do it, right? That's why the reason app and web developer always want vector file, right? Other one, animation. Animated images are also usually created as a vector file, which provide the cleaner and smoother images. In animation film, artists need the same character or backgrounds in multiple shots, like close-up and extreme close-up. So only vector file can provide the freedom to stretching the characters. Is it okay? So as a 2D animator, we are working with the Animate CC or any other software. So we want to create a different characters. Suppose we all have to create a front side of the character, side view of the character, and the backgrounds also in a different sizes. And in a film, we are creating a film, so definitely we have to do some kind of zoom in zoom out of the character. So we never create different faces or different sizes of the character. We just create a single character, and we can easily zoom in and zoom out on that particular character, and we can easily change the specific color. Suppose in a color of the character we want to change, of the button, of the shoes, so we can easily pick the select the color in a vector format, or we can easily change it. So that's the freedom for the vector art we can find, right? Uses of vector graphic. Computer aided design, right? It's a CAD. So in a CAD file, CAD program frequently use vector files for manufacturing, engineering, and design because of their scalability and the ease when it comes to editing the mathematical formulas, right? So suppose we want to create a map, or we want to create any automobile design. So always CAD file comes in a vector. Definitely they use for the vector files because we can stretch it. We can any kind of design we can stretch. That's the main reason behind the vector files. There is a mathematical calculation. It will help to understand, or it will help to stretching the images anytime or any sizes, right? Raster and vector graphic. What's the basic differences between raster and vector? It's already covered in a Photoshop part, and I think in a first PPT I will describe about all these things. But again, in a vector art, or what is the difference between raster art, right? So raster graphics are made up for a fixed number of pixels. It's a raster based on a pixels, which makes them less scalable than vector graphics. Because suppose we mention the resolution when we opening a file in a Photoshop, so there is an option for the resolution. So DPI, so we will find out the 300, 200, 150, 100. We can any resolution we can give the file size, and according to the number of the pixels we can stretch it. If we make extreme zoom in on the particular raster image, so we can find the pixels, right? So image looks much blurry, right? But in a vector graphic, the edges become rugged and the appears pixelated. So when we zoom in, it got pixelated. Computer must store information for every pixel of a raster image, whereas vector images only store the series of points that need to be connected by lines, right? So in a vector graphic, we found a mathematical calculation about the sizes and the shapes, and we can anytime stretch with the numerical number, curves, etc. Consequently, vector files are usually smaller than raster files. Okay, because it creates the information in a mathematical counts. So it's not an heavy file. Raster file would be heavy. Comparison, if we compare with the vector file, so raster file would be heavy because we use pixels for that. Vector image files are easier to modify than raster images files for this reason. Reason behind the editing in the images, we if we want to edit the images like photograph or any kind of raster image, so we need to always pick the selection,
right? Suppose we design any on a Photoshop or any other raster software. So we need to pick the color separately. We have to create the selection and we can change inside it. But in a vector art, always we found the separate selection for the separate colors. So there is a no blending in a colors. We found the separate colors, and the blending of the color we need to use the multiple color options or shades, right? So raster files are particularly good for portraying color depth, as each pixels can be different color, right? So it means when we see the raster files, we found the very smooth color blending or depth. If we compare it in vector art look much flatter or flat images. It look much clearly 2D images, right? But raster graphic looks much realistic, hyper realistic. So most of the backgrounds or animation film, suppose we want to design a character in a hyper realistic way, so we have to create the raster files for creating hyper realism. Okay, but in a vector design we have some freedom. So both side we have the some important information we have to understand, that in our the importance of raster graphic, on the other hand the importance of vector graphic, right? So there is some advantages and there is some disadvantages for the both side, right? ऐसा नहीं है कि केवल वेक्टर ग्राफिक की डिमांड है या रेस्टर की डिमांड है. कंडीशंस के अकॉर्डिंग वी हैव टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, वी हैव टू ऑपरेट द डिजाइन. Sometimes clients want logo, so definitely clients make a vector file. Client wants vector file, right? And suppose we want to fill the color, we want to create a background for the movie, so definitely they want some raster file, because we can create the realistic image or realistic background with the raster images, right? So every time it all depends on the requirement of the clients, what the client wants. So we have to put our design on a vector or raster, right? Then as pixel, more pixels that can be unique colors than vector that can be unique colors. This makes raster file formats good for editing digital photographs, right? So we can easily find out the hyper realistic drawing or design in a raster images instead of vector. Software for raster and vector graphic. Vector and raster images can be converted into one another with the right software. Adobe Illustrator and Adobe Photoshop are examples of software that enable users to convert one image format to the other. Right. So here is the Photoshop raster image editor, photos, artwork, web graphics, mockups. यहाँ हमारे पास क्या फीचर्स मिलते हैं? लेयर्स, इमेज एडजस्टमेंट और एनिमेशन. ये सारा कुछ हम फोटोशॉप पे कर सकते हैं. इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक एडिटर, जिस पे हम क्या बनाते हैं? मोस्ट ऑफ द लोगोज, मैस्कट्स, आइकन्स, वन पेज डॉक, एक पेज का वेक्टर शेप्स बना सकते हैं, टाइप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आर्टबोर्ड्स. सो इलस्ट्रेटर पे हम मोस्टली काम जो करते हैं वो क्या होता है? मैप्स बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, या आइकन्स बनाने हमें किसी चीज़ के लिए वो किए जा सकते हैं, ठीक है. और मोस्टली आप पेज एडिटिंग का काम कर सकते हो. जैसे सपोज आपको कोई एक पोस्टर या लोगो डिजाइन करने के बाद आपको उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, सो यू कैन राइट अप द डिस्क्रिप्शन इन इलस्ट्रेटर, इट लुक मच बेटर, राइट? एंड देयर इज लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस फॉर इलस्ट्रेटर. Illustrator means it comes with the word illustrations, right? Illustration, it means drawing, right? So AI, it means Adobe Illustrator. Adobe is the name of the company, and Illustrator means we can illustrate anything, right? So it's a useful tools. There is a useful tools for illustrations, but on the Photoshop we can do raster illustrations or character designs. We can use it like a sketchbook, right? So disadvantages of vector graphic. Less detail. Vector files are limited in detailing with complex images. For instance, photographs require color shading and blending that vector files cannot provide, as well as raster files. We cannot blend the colors in a vector file. We have a separate sections for the colors. So we need to pick the separate colors. If we want to create a roundness or depth inside the character or design, any kind of design, we want to create a roundness, volume or form, or we can say the shades. So we need to pick the separate color. We need to prepare the separate sections for the different colors in a vector file. So that's the reason vector file not look much hyper realistic, and it's very complicated when we want to design a realistic character, realistic drawings or realistic background. So it comes very complications. It comes
lots of complications inside the vector art. On the other hand, if we work out on a raster software, we can easily do this. There is a tool like a gradient we can use. We can use the brushes, right? So we can easily blend the color. Skill and time requirements. Vector files are can require more skills and time to create. ओके सो जो मैंने आप लोगों को बताया कि वेक्टर आर्ट में टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है क्योंकि वी नीड टू क्रिएट अ सेपरेट सेक्शंस, वी नीड टू पिक द कलर इन अ सेपरेट सेक्शंस, देन वी कैन मेक राउंडनेस और वॉल्यूम इन द कैरेक्टर और बैकग्राउंड. Limited browser support. There is less support of vector graphics on web browsers than for raster graphics. बहुत लिमिटेड जगह रिक्वायरमेंट्स आती है. अगर हम वेक्टर आर्ट की बात करें, वेक्टर आर्ट की बात करें तो केवल लोगोज हो गया, मैस्केट्स हो गए, आइकन्स हो गए, केवल छोटी छोटी जगह हम वेक्टर ग्राफिक को यूज कर सकें. अगर हम रेस्टर ग्राफिक्स से इसको कंपेयर करते हैं, इनकंसिस्टेंसी. वेक्टर इमेजेस कैन वेरी फ्रॉम द एप्लीकेशंस टू अनदर depending on how compatible the rendering and creating applications are, among other factors. It means if we work in a vector design, we want to open the vector files in a Corel or AI files in a Corel. So we found some very or different information inside the other softwares. If we are using different software, suppose we want to import this vector files in a software like Adobe After Effects or Premiere. So maybe sometime it won't be changed. We found some little bit changes inside this file. So generally people expect the raster files. Client wants raster files. But if we focus on the design of logos, mascot, icons, so definitely maps. Suppose we want to design a map and we want to print out. So always we do with the AI on AI, right? So there's a basic differences with the vector or raster design. Is it okay, guys? I hope this PPT is already uploaded on iCloud, so you can download this PPT, go through with this PPT, and you can understand what's the difference between raster and vector. But when we start working on the practical side, so we need to create this kind of images, this kind of design. I will show you. In this PPT, you can find out the design. This one. I will do zoom in, so you can find out the specific details. दिख रहा है आप लोगों को? सेम इमेज है. रेस्टर दिख रहा है तो आपको हाइपर रियलिस्टिक दिखाई दे रहा होगा. वेक्टर में आपको फ्लैट दिखाई दे रहे होंगे कलर्स के वेरिएशन. सो वी नीड टू पिक द सेपरेट कलर्स फॉर दैट. अब यहाँ आपको राउंडनेस क्रिएट करने के लिए और आपको आई वॉल बनाने के लिए आपको दिख रहा है ना कितने सारे कलर्स को वेरिएट यूज किया है. यहाँ आपको ग्रेडियंट दिख रहा होगा. ग्रेडियंट इट मीन्स द कलर कम्स with the 2 or 3 colors, so there would be a gradient. So there is a high most darkest orange and it comes and blended in the yellow, so you can find out the shades between the yellow and orange, but you can see the difference. There is a only brownish tint and the yellowish tint. So if we want to create a more realistic design, so we need to pick the orange color and then we have to create the selection here and we can fill the color. So that's the basic differences in the vector and the raster design. So few designs definitely is required in a vector art. So there is a icons. You can see this is the vector icons. Is it okay? समझ आ रहा है आप लोगों की? तो सपोज अगर हम जैसे कोई इंफॉर्मेशन हम कोई साइन बोर्ड पे डिजाइन बनाना चाहते हैं, वी वांट टू डिजाइन अ साइन. सपोज देयर इज नो स्मोकिंग जोन, right? There is a we want to design an icon for that, or we want to design a symbol for that. So we will start with the vector design, जिसमें वो हम किसी भी साइज में कहीं भी प्लेस कर सकते हो. ठीक है. सो आपके डिजाइन और आइकन इस तरीके से बनेंगे. ये डिजाइन वेक्टर में होगा तो आपको सेपरेट कलर्स दिखाई देंगे. We can easily find out the separation of the colors. Easily find out the separation of the colors. So कौन सा कलर कहाँ पिक किया है, we can find out in a vector design. Right? कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है? We are going to start with the pen tool. This is my Photoshop. Is it visible? Yes, let me. Yes, sir. Okay. So, where is the pen tool? Always the key for the shortcut for pen tool is P, right? So when we press P, so my selection of pen tool comes. Okay, and here is few new tools. You found freeform pen tool,
curvature pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, convert point tools. Okay, uh, all the shortcuts for this pen tool is P, right? So just press P and just do confirm and sure that you selected the right pen tool. The top one is a pen tool, right? So here is the pen tool, and in a Photoshop definitely you have to use separate layers always. So I'm just creating a different layer and give the name. Suppose we want to design a path. It means we call it in Hindi, rasta or lines. It's called path, right? So path, it means there is an option when you find on the tool control palette. So there's a tool control palette. You can find out the shape or path. So what exactly you want to design? You want to design a shape or path. So you have to select the option. Always we want to make out some vector design. So always we pick path, right? So what's the difference in path and shape? We will describe again. So this is the basic or very important tool. We find this important tool in Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and in a Corel Draw there is a new name for that. So in a Corel Draw we have another option for the pen tool. This is the very important tool. We found it everywhere. So in Animate CC there is another option for the pen tool. We find the pen tool here also. So this is very important tool. I know that you guys are aware about this tool, because if you are in an animation industry and you are using softwares like Photoshop and other tools like Animate CC, you are working on the Animate CC now? सारे लोग? So I think you are aware about that Animate CC. अगर आप कर रहे हो तो आपको पेन टूल पता होगा, राइट? सो यहाँ फोटोशॉप में भी पेन टूल का यूज आता है जब हम कोई डिजाइन बना रहे होते हैं और वी नीड टू सेलेक्ट समथिंग. So for the complication selection, we use there is some kind of a curvical selection we want make. So we always prefer for pen tool. So there is a few different options for selection. I will repeat again because there is few new students like Aneshu and other students. I don't know they are aware about the Photoshop or not. How much they are aware about that. So I'm repeating the few tools. Then we will begin with the pen tool. Right. So there is the selection tools. These are the few selection tools. Rectangle marquee tool. So we always select like a square or rectangle or sharp lines or sharp edges or sharp corners. We can select with the help of marquee tool. Suppose we want to select a square or rectangle sometimes in image. I will give a demonstration so you can find out the very easily. Suppose I have this image. Okay, is it visible now? And I want to select this image. So I will prefer always this tool. It makes quick selection. So just go and select, right? Is it visible? So यहाँ हम इसको सीधा सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं. इन लाइंस को हम बाद में रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, इसलिए इसका शार्प सिलेक्शन नहीं आ रहा है. लेकिन अगर मैं कोई दूसरा रेफरेंस देख लेते हैं एक बार. आई होप ये इजीली हो जाएगा. सो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सो ये देखो क्विक सिलेक्शन मेरा इससे बन जाएगा, राइट? सो शेप क्या है और हमें कौन सा टूल यूज करना है, दैट्स आवर माइंड एंड क्रिएटिव माइंड. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच टूल इज अप्रोप्रिएट फॉर द सिलेक्शन, राइट? किस शेप को हमें कब सिलेक्ट करना है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी हैव टू पिक द टूल, राइट? Is it okay? And sometime we have to create some complex selection. Suppose ये वाला है, ठीक है, इसको select करना है. So what we do, we can use lasso tool. Suppose we pick the lasso tool. So you can find out the way the lasso tool works. It's a freehand tool. So random we can create shapes or curves, but we cannot find the sharp edges. With this tool we can make selection, right? So another tool inside the polygonal lasso tool. So just select and you can see there is a line, right? So we have an option, different tools for the selection. कब किस इमेज को हमें सिलेक्ट करना है, तो हमें कौन सा टूल यूज करना है, दैट्स वी हैव टू फाइंड आउट इन अ टूल पैलेट.
there is a lots of tools for the selection, right? Selection, it means what the use of selection. Anyone elaborate? Can anyone elaborate about the selection? Why the use of selection? What's the use of selection? The mask out the delete. स्पेसिफिक एरियाज पे हम काम कर सकते हैं और हमारा बाकी कैनवास खाली रहेगा। जिस स्पेसिफिक एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं केवल उस एरिया पे हम करेक्शंस और चेंजेस कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू डू द कलर करेक्शन इन दिस particular image or particular area, so we select this and there is an option for hue saturation, right? We want to do some changes, so we can, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था hue saturation आपको कैसे यूज करना है। अगर मुझे पर्टिकुलर लेयर पे कलर करेक्शन करना है तो मैं यहाँ से पिक करूंगा, और अगर मुझे सपोज डिलीट करता हूँ, मुझे इस इमेज के ऊपर अप्लाई करना है तो मेरे पास ऑप्शन कहाँ से होगा, इमेज, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से अगेन सेम ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। सो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तब होगा वो, ठीक है। इसको कर लेते हैं और इस इमेज के ऊपर ये पड़ा हुआ, देन गो इमेज, एडजस्टमेंट्स, ह्यू सैचुरेशन, राइट। अगर हम यहाँ से इसमें कलर करेक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होंगे, यहाँ से अगर हम इस पर कलर करेक्शन करेंगे तो वी कैन नॉट एडिट इट, हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। जो इसमें चेंजेस हो जाएंगे वो इसमें फिक्स हो जाएगा चेंज। सपोज मैं यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसमें कोई भी कलर करेक्शन करता हूँ, चेंजेस करता हूँ उसके कलर में, लाइटनेस, डार्कनेस, ठीक है, तो ये देखो यहाँ इसका कोई अलग लेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, और ये फिक्स हो जाएगा। जो इमेज में हमने चेंजेस किए वो यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए दो ऑप्शन है कि अगर हम ये इस जगह से यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वी ऑलवेज पिक और कॉपी द लेयर, कंट्रोल जे, और इस लेयर के ऊपर हम चेंजेस करेंगे, सो मेरी ओरिजिनल फाइल हमेशा सेफ रहेगी, ठीक है। सो ऑलवेज पिक द डुप्लीकेट लेयर फॉर द पर्टिकुलर इमेज इफ यू वांट टू चेंज थ्रू this channel, right? Is it okay? And if we want to do some changes just because of selection, we have to do some selection first, and just so, मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन करने के बाद। सपोज ये मेरा सिलेक्शन है, राइट, एंड यू वांट टू सम कलर करेक्शन, सो जस्ट रिमूव दिस लेयर, कि मैंने यहाँ कॉपी नहीं किया। सो अभी मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यू वांट टू डू ह्यू सैचुरेशन। सो यहाँ देखो देयर इज सेपरेट लेयर, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज मुझे इसको ग्रीनिश करना है, येलोइश करना है, तो मैं इसको यहाँ चेंज कर सकता हूँ। दिख रहा है? कितना ग्रीन, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, वी कैन एडजस्ट, लाइटनेस। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस? ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में समझाया था। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यू, सैचुरेशन, व्हाट एग्जैक्टली ह्यू इज, व्हाट इज ह्यू? कम ऑन, ओपन योर माइक एंड एलैबोरेट, व्हाट इज ह्यू? क्या है ह्यू? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे कभी भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट द वर्ड, व्हाट इज ह्यू। ओके, व्हाट एग्जैक्टली ह्यू इज? अदर वन, ओपन योर माइक। मैं पिक करूंगा फिर नाम आप लोगों के रैंडमली यहाँ से, जिसने नहीं बताया उसका एब्सेंट। आज आज बहुत लंबी क्लास जाने वाली है, आज तैयार हो, फोटोशॉप बहुत हो गया तुम लोगों से, बहुत सारा फोटोशॉप करना है। अमान सिद्दीकी, मेरी आवाज आ रही है? नोएल, जस्ट म्यूट योरसेल्फ, आई वांट टू आस्क फ्रॉम अमान फर्स्ट। अमान? Yes, sir. हाँ जी, व्हाट इज ह्यू? Sir, it is the color or shade. कलर और शेड एक ही चीज है, अलग अलग है? सर कलर मतलब सर जैसे ब्लैक, ब्लू और शेड। ब्लैक कलर होता है? यस सर। ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट कलर। Black, it means when we don't found any light, so it comes black, and we find only light, so it convert into a white, right? Yes, There is, this is no color. Color is red, yellow, blue, green, right?
So hue means it's the pure color, right? So we can do change in the color. तो मैं color में यहाँ से change कर सकता हूँ hue, it means color, ठीक है? तो इसका color कहाँ से change हो रहा है? Hue की वजह से, right? Saturation क्या करेगा? उस color के वार्मनेस उसको बढ़ा देगा। so देखो कूल और वार्म करता है, ठीक है, कलर को, यानी हम यहाँ कर रहे हैं तो ऐसे डल कर रहा है सैचुरेशन में, यहाँ हम कर रहे हैं तो इसको वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा है उसका, ठीक है, दिख रहा है आपको? सैचुरेशन से यहाँ इसको डीसैचुरेट कर रहे हैं। डीसैचुरेटेड मीन्स कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, डीसैचुरेट करना, राइट? सैचुरेशन जैसे ही इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, इसमें कलर की क्वांटिटी और कॉन्ट्रास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा और सैचुरेट इमेज आपकी दिख रहा है, डीसैचुरेट हो रहा है, ये हो गया डीसैचुरेट, सैचुरेशन ऐड ऑन हो गया, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, राइट? और उसके बाद अगर हम जब हमने इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया कि मैं इसको कितना ब्राइट चाहिए, सो वी कैन डू द लाइटनेस, कि हमें सॉफ्ट कितना करना है इसको। सो ये आप देखो लाइट के पे काम करेगा ये, इसकी दिख रहा है ना, व्हाइट कर देगा 0, समझ में आ रहा है? तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? लाइट, जो मैंने आपको बताया। अगर जहां कहीं भी व्हाइट है, इट मीन्स देयर आर द लॉट्स ऑफ लाइट्स, दिख रहा है ना, प्लस 100%। तो लाइट जब फुल लाइट आया वहां पे क्या हुआ? व्हाइट हो गया वो पूरा। और जैसे ये 0 होगा, लाइट चला गया, तो ये क्या हो गया? सारा एरिया ब्लैक हो गया। ओके, सो इट मीन्स the person who knows English, so I will repeat it again. So when you pick the light and light comes on any object and there is only light, so it converts, there is no color inside we can find. So there is only a white tone we can find out. And when we reduce the light and as much as like 100% we reduce the light, so there is only a black tone. There is no color. Is it okay? And when we add some light, so we can find out the details. जब किसी चीज के ऊपर लाइट पड़ता है, सपोज आप ऐसे समझ सकते हो, देयर इज इनसाइड अ रूम, देयर इज नो लाइट, एवरीथिंग इज ब्लैक, सो दिस इज द वे, दिस इज टोटली ब्लैक, वी कैन नॉट सी एनीथिंग just because there is no light, because light is 0 minus 100, there is no light, right? We want our, in a morning sun rises and there comes some light, so जैसे ही light थोड़ा सा आएगा, so we can find the objects and we can see the details, right? Okay, हेलो and जैसे जैसे लाइट इसमें बढ़ता जाएगा, सो वी कैन सी द हेलो डिटेल्स। कौन है यार ये? किस, हु इज, कौन था ये? Is it okay? So that's the use of light. The sharp lights comes in afternoon, so you can find out when the afternoon is comes, we can see the sharp lights, and when the light gone, the proper light comes on the highlight, so there is no details inside it, so it comes in a white. So we need to manage the lightness. Okay, this is the way of using light. Is it okay? It's very easy and simple narration about the light. बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन है कि लाइट क्या काम करता है। सो आपको इन टूल्स के बारे में जब काम करो तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा, हमारे डिटेल पे किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। मैं किसी को फोटोग्राफ को एडिट कर रहा हूँ, तो ये केवल उसकी लाइट को इम्पैक्ट करेगा, राइट? सैचुरेशन उसके कलर को इम्पैक्ट करेगा, राइट? और ह्यू क्या करेगा? उसका स्पेसिफिक कलर देगा। सपोज वी वांट दिस डिजाइन इन अ ग्रीन कलर, सो वी नीड टू डू चेंजेस इन ह्यू। हम उससे सैचुरेशन पे काम नहीं करेंगे। अब इस ग्रीन को हमें कितना लाइट और डार्क चाहिए, सो वी वर्कआउट ऑन द सैचुरेशन, दिख रहा है? और यहाँ क्या है? ये लाइट है, कितना लाइट और डिटेल और शेडो हमें शार्प दिखना चाहिए, सो वी कैन मैनेज विद द लाइटनेस, राइट? सो दिस इज द ऑप्शन। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मैं कभी भी इसको चेंजेस करना चाहता हूँ, सो मैं वापस इस लेयर पर जाके काम कर सकता हूँ। वापस सेलेक्ट किया और वापस मेरे पास एक कॉलम आ गया, सो वी कैन डू चेंजेस एनी टाइम, राइट? Sorry, back. Okay, always use V, right? और इस लेयर को आप as we know कि हम इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं। So this is the benefit of applying on the layer. यहाँ आप देखोगे तो क्या आता है? क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इट मीन्स कि जब भी हम इस पर चेंजेस करेंगे तो एक डिफरेंट लेयर यहाँ से आएगी और वो हमारे इम्पैक्ट जो हमारा इमेज होगा उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देगी, एंड वी कैन डू द चेंजेस ऑन द पर्टिकुलर सेपरेट लेयर्स, एंड वी कैन एनी टाइम वी कैन डिलीट दिस इमेज. So this is the another way of selecting the tools. One selection tool, second selection tool, right? And then
we have an option pen tool, right? How it works. So first we go with the path, right? We select the path from the top tool control palette. This is the part of tool controlling, right? It's related only, जो भी टूल हम यहाँ से पिक करते हैं उसके कंट्रोल हमारे पास इस जगह मिलेंगे. तो आप कोई भी टूल पिक करो, सपोज मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ तो देखो कंट्रोल चेंज हो गए यहाँ के कंट्रोलर्स. सो वी कैन डू द चेंजेस इन माई रेक्टेंगल मार्क्यू टूल. कहाँ से कर सकते हैं? ऊपर हमारे पास कंट्रोल पैलेट आ जाएगा. फेदर ऐड कर सकते हैं, स्टाइलाइज को चेंज कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे हम पेन टूल पिक करते हैं तो यहाँ पेन टूल के कंट्रोलर हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, सो हमने पाथ लिया हुआ है और पाथ के लिए मैंने एक अलग लेयर ली हुई है. पाथ मैंने नाम से क्रिएट किया हुआ है. अगेन जस्ट क्लिक, तो एक ये स्क्वायर आपके सामने सेलेक्ट कर देता है. जैसे ही मैं इसको दूसरी जगह क्लिक करूंगा तो ये उस स्क्वायर से कनेक्टिंग एक लाइन वहां ऐड कर देगा. सीधा लाइन दिख रहा है आपको? जहां कहीं भी मैं सिलेक्ट करूंगा ये देखो, और वापस जब हम इसके पास आएंगे तो ये आपको पेन जहां मेरा कर्सर है उसमें देखो एक राउंडनेस दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कल दिखाई दे रहा है छोटा सा. इट मीन्स ये बता रहा है कि यहाँ आप इसे ज्वाइंट कर सकते हो इसके साथ. अगेंस्ट जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ तो ज्वाइंट हो गया. ठीक है, दिस इज द बेसिक टूल. जैसे ही हम उसको क्लिक 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 करते जाएंगे इट क्रिएट्स अ एंकर पॉइंट्स, राइट? ये पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड द एंकर पॉइंट्स. दिख रहा है? जैसे ही मैं इसको वापस जाऊंगा तो इस सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स कि मैं इसे ज्वाइंट करना चाहता हूं तो मेरा पाथ क्या हो गया? क्लोज हो गया. समझ आ रहा है बात आप लोगों को? सर एक्सक्यूज मी सर, एक चीज था सर, इन हाँ, लाइन से कर्व कैसे बनेगा? इसके लिए अभी बता रहा हूँ. एंकर पॉइंट्स होते हैं इसमें जिसमें हम हैंडल्स पे काम करते हैं. ठीक है, अभी मैं केवल पाथ बता रहा हूँ कि पाथ को आप कैसे पेन टूल के साथ क्लिक क्लिक करके कर सकते हो. इज इट ओके? ये समझ में आ गया? यस सर. ओके, सो पेन टूल, राइट? अभी मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ लाइन को रखता हूँ. अभी लाइन एग्जैक्टली सीधा नहीं आ रहा है. तो सीधी लाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको यहाँ शिफ्ट प्रेस करना है. शिफ्ट के साथ जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये लाइन सीधा आएगा. पहला टेक्निक लाइन को सीधा रखने के लिए, स्ट्रेट लाइंस के लिए कंट्रोल Z कर रहा हूँ. मुझे सीधा लाइन क्लिक करना है. ये देखो अभी लाइन मेरा सीधा नहीं है. मैं शार्प सीधी लाइन करना चाहता हूँ तो इसको क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके रखा. देन वी नीड टू click another click and we can find out the straight lines. Is it okay? We want to another straight line, so just press the shift key and click it. Press the shift key, click it. Press the shift key and click. Right? अभी ये tilted क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ ज्वाइंट गलत जगह था, राइट? लेकिन लाइन का साइज स्ट्रेट है, लाइन शार्प है, लेकिन ये ज्वाइंट जहां मैंने किया वो स्ट्रेट नहीं था. सो व्हाट द ऑप्शन फॉर दैट? वी हैव एन ऑप्शन. आप इस पे जाओ, कंट्रोल जैसे ही हम प्रेस करेंगे वी हैव एन ऑप्शन फॉर कंट्रोल. कंट्रोल जैसे हम करते हैं तो एक कन्वर्ट हो जाता है पेन टूल किसमें? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में. दिख रहा है? वी कैन सी द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल व्हेन वी प्रेस द कंट्रोल की एंड द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कम्स inside the path selection tool. So there is two option, path selection and direct selection tool. So when we press control with the pen tool, so my pen tool convert it into a direct selection tool and then I can select this particular anchor point and we can shift. Is it okay? तो अभी जो मेरी लाइन टिल्ट हो रही थी, नाउ इट्स स्ट्रेट. इस वाले पॉइंट के साथ भी सेम वी कैन डू. मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको चेंज कर लेता हूं, राइट? इज इट ओके? सो वी कैन डू द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ एंकर पॉइंट और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल. कभी भी मैं पाथ को पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूं, अभी मेरा एक ही एंकर पॉइंट सिलेक्ट है. अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन पता चल रहा है आपको, ये ब्लू दिख रहा है, बाकी जो बॉक्सेस हैं वो व्हाइट हैं. इट मींस द ओनली दिस सिलेक्शन इज सिलेक्टेड, दिस एरिया सिलेक्टेड. सो मैं इसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ कहीं से भी. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इज इट ओके? किसी भी पॉइंट को बस मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और उसको मैं कभी भी स्विच कर सकता हूँ. इज इट ओके? समझ आ रहा है आप लोगों को इतना? ये है हाउ टू यूज
पेन टूल, राइट। देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा आई विल पिक द डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल, सो आई कैन सिलेक्ट द होल पाथ एनी टाइम, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा हमेशा, एंड देन आई कैन डिलीट इट फॉर द पाथ सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन इट मीन्स इट वर्क्स ऑन द पर्टिकुलर सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, जहां भी एक सिलेक्शन हमें करना होगा। सो ऑप्शन, जस्ट प्रेस शिफ्ट की और ये हमारे पास लाइन आ गया। इज इट ओके? अनदर लाइन वी वांट टू यूज। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूं इसके साथ ये सिलेक्टेड एरिया है और ये इसके साथ चलेगा, राइट। नाउ आई जस्ट प्रेस कंट्रोल की एंड स्विच इट। अभी आप देख रहे हो जैसे ही एंकर पॉइंट के पास ये जा रहा है या माइनस आ रहा है पेन टूल के साथ, इट मींस इट कैन सपोज वी ऐड, जैसे आप पाथ पे जाते हो बीच में, आप देखो यहाँ पाथ पे मैं गया तो ये एंकर पॉइंट दिखा रहा है, यू कैन ऐड सम एंकर पॉइंट्स, यू कैन ऐड थ्रू देयर आल्सो, ऐड एंकर पॉइंट्स, ओके। सो देयर एन ऑप्शन, लेकिन ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ अपने आप आ जाता है पेन टूल के साथ। हम बीच में अगर इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू इंसर्ट एनी एंकर सिंपल पॉइंट, सो वी कैन ऐड इट हियर, राइट। एंड नाउ we want to remove, so again जब हम एंकर पॉइंट के पास जाते हैं, so there is a minus and we can just click it and we can remove it, ऑटोमेटिकली वो अपने आप जज करेगा। जैसे ये प्लस में आएगा ब्लैंक स्पेस होगा तो ये देखो प्लस हो जाता है, जैसे ये माइनस पे जाएगा, यहाँ ऑलरेडी है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, वी कैन रिमूव इट एनी टाइम, राइट। नाउ suppose we add anchor point and we want to make this line curve, so we just add in and you can see अभी मैं यहाँ कंट्रोल के साथ वर्क कर रहा हूँ और आप देखो यहाँ ये मेरे पास दो एंकर पॉइंट्स आ गए, वी कैन डू द चेंजेस। क्या चेंजेस करना है, ठीक है, अर्पण समझ आ रहा है? दैट्स द वे यू कैन यूज कर्व्स, यस सर। ठीक है। यहां से हम इसको स्विच कर सकते हैं, सेम वी कैन डू विद दिस, राइट। क्या करना है, there is two different sections for the handles, one is the right and one is the left work outs on the another half portion of the selected area of the anchor points, right, and the right anchor points works on the right hand area, so इनको हम कर्व को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम वी कैन डू विद दिस एड ऑन and just right, and we have two handles for that, so we can do any kind of changes. Suppose we want to design something, we can do it, right. So in this way we can change the design anytime and my lines look much curvical and smooth, okay। जैसे suppose ये smooth नहीं है, so view what we can do, so inside it there is an option, you can see curvature pen tool। अभी मैं इसके पास जाता हूँ, दिख रहा है इसने क्या किया, इट क्रिएट्स अ कर्विकल वे, ये देखो यहाँ कर्व है, यहाँ कर्व नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, सी इट्स curve and we can manage curves with handles, see now I want to add some more anchor points, so just select it and then select, अभी I want to create curves, so इसको select किया मैंने, पेन टूल मेरे पास है, go with the direct selection tool, path सारा select किया, path press alt key
and you can find out the handles किसी भी एंकर पॉइंट्स पे। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करोगे, सपोज मैं यहाँ जाता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ आई कैन फाइंड द handles. See, it okay? We can make curves everywhere. My files and my design, the right, and when we pick direct selection, so we just select, click it, and we can do some direct selection. Can reduce the sizes also of anchor points. Right, minus, and we want to fill the shape, so there is option, just right click and there is an option for fill path. We can fill the path what exactly color we want. Suppose we want the foreground, background, or color, so we have the color option, we can select the color. Okay, then okay, is it okay? And another time we can do some changes if you want. हमेशा पाथ आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? तो आप जब भी इसमें चेंजेस करना चाहो, यू कैन डू चेंजेस। जैसे ही आप इसको हटा लेते हो तो आपका शेप दिखाई देगा, इट्स अ वेक्टर शेप। जैसे ही आप इसको जूम करोगे, यू कैन सी द शार्पनेस। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट, when we design something with the help of pen tool and we select the path, so we can find this is the sharpness of the resolution, you can see. So because this is a vector path, और इस पाथ को हम कभी भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है? एंड वी वांट टू डिलीट द पाथ, जस्ट डिलीट, और अब लेयर हमारे पास सेपरेट है, देन वी कैन शिफ्ट द शेप. So in this way we can design logos, in this way we can design any kind of vector art. So और इसमें कलर चेंजेस करने के लिए वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, अभी आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक. Just do some practice with anchor points, control, alt, shift, all these specific key points you have to use for the pen tool, and try to create some kind of shapes or design. You have to create, you can create save electricity, just design any kind of symbol or icons for the save electricity, no smoking, right, and no horn. ओके, इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे से आइकॉन्स और सिंबल्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन टूल. क्लियर है? कोई डाउट, कुछ पूछना है? It's the task for practicing. It's depend on your practice. Just start doing some practice with rough pen tool, how to use, how to illustrate. Then I will mark here some assignments. So you have to start working on the assignments with the help of a pen tool. You have to create some vector art. कोई डाउट?